Dear students, today I am going to start revision of exercise 1.1. As you all know that in this chapter, in this exercise, we have how to find out greater, smaller of rational numbers. Between two numbers are given, you have to find out which is greater and smaller, absolute value, ascending descending order, and some word problems are there. So firstly I am going to tell you how to find out which number is smaller and which is greater. Suppose let's 1/2 and 3/4. Suppose these two rational numbers are given and we have to find out the greater one. I have told you many methods, two methods also. Now this time first method is by making the denominator same, or second one is cross multiplication. Choice is yours which method you are preferring. So if we are doing this by LCM method, so what is there? 2 and 4. What is LCM? 4. इससे इसको डिवाइड करोगे 2, 2 1 जा 2 and it is 3. If you have to find out smaller or greater, in every these steps are same. Now if you have to find out smaller, which is smaller? This one. So like this. So 2/4 is less than 3/4, or you can write it as 2/4. कौन से वाली टर्म थी? 1/2 is less than 3/4. This is the answer. If greater one, तो greater one ये है. So 3/4 is greater than 1/2. Or this the same question you can do by 1/2 and 3/4 by cross multiplication. आप इसके साथ करोगे, एरो लगाओगे आप यहाँ से. नाउ फर्स्टली आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो पहले यही लिखोगे 4 and this is 6. You will not write here as 6 and here 4. यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6. अब जो यहाँ पर न्यूमरेटर में है और यहाँ डिनोमिनेटर में, पहले आप इनकी मल्टीप्लाई को यहाँ लिखोगे. सो 4, दिस इज स्मॉलर, 4 इज स्मॉलर देन 6. और ये 4 अब कौन से वाली टर्म है? 1/2 इज लेस देन 3/4. लाइक इन दिस वे you have to find out. Suppose negative terms are given, then how you will find out? Negative terms, suppose -5/6 and 7/8. Suppose these two terms are given. This is positive, this is negative and this is positive, and you have to find out which is greater. obviously बात है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा ना, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो. आप वहाँ पर फिर मेंशन कर देना कि एक पॉजिटिव टर्म है एक नेगेटिव है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव ग्रेटर होगा. और इफ़ यू डू विद द मेथड, सो सपोज बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसके साथ पहले करोगे. सो व्हाट इज दिस? -40 एंड दिस इज 42. सो दिस वन इज ग्रेटर. ये वाली टर्म आपको ग्रेटर फाइंड आउट करना है, तो ये वाली टर्म है, तो ये कौन सी आपके पास? 7/8 इज ग्रेटर देन -5/6. If both the terms are negative, then what will you do? Suppose -3/7 and -5/8. Suppose this one. By using the same method or by taking LCM, choice is yours. Suppose this one, आप इसके साथ करोगे -24 and this is -35. Both the terms are negative and you have to find out which is greater. अब नेगेटिव है, जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा. आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दिस थिंग. सो इट मीन्स अब यहाँ पर ग्रेटर वन कौन सा? वैसे तो 35 24 के कंपैरिजन, बट नेगेटिव लग गया तो कौन से वाला बड़ा हो गया आपके पास? -24. सो दिस वन इज ग्रेटर. -3/7 is greater -5/8. I hope this type is clear to all, how to find out
greater or smaller number, or how to compare the rational numbers. If denominators are same, then there is no issue. Then also you can do with the same method. Suppose we are given with 2 by 7 and 3 by 7. Suppose this is given. So denominators are same, न्यूमरेटर्स आर डिफरेंट. तो अगर न्यूमरेटर छोटा है तो वो नंबर भी छोटा होगा. अब ये क्या है हमारे पास 3 by 7, 3 बड़ा है तो इट मीन्स दिस इज ग्रेटर.